Yes, sir, it was fine. Solutions. Okay. For better policing, he demanded the repealing of obsolete laws and also for prison reforms and enhancement of operational and operational synergy among the different policies of different states and UTs. Okay. But there are certain reforms which were in fact not taken up for discussion at that particular conference, which have been outlined in this article. First one is that the Model Police Act, which was drafted by Soli Sorabji, it has not yet been enacted, nor have any of its recommendations been taken. So because of this, we are still having we are still following the old colonial acts for policing. They have been continued. And second one is the issue with the police infrastructure. There are more than 5 lakh vacancies, and the police to people ratio is also very less. When compared to the other states, India has only 195 policemen per lakh population, which is very less. So this is the second major issue with respect to police, sir. The third one is the support system, which the police really want, but which they are not getting. With respect to housing or any other amenities and facilities, the constabulary and the lower police are made to, in fact, they have not even been given proper housing. So this is one of the third major issue. The support architecture is not there in police. Then the fourth major issue is with respect to training. There has been only around 6% of the police who have been trained properly, whereas the other they are not getting the mid-service training or the in-service training, and also the training is focusing more on the academics rather than the practical or the field-oriented training. Then the last one is the issue of federal crimes. That is, there are certain crimes which in fact is an issue throughout the territory of India, whereas the police is mainly a state subject and it is divided into states. So this is hampering the coordination and the interconnectivity between different state policemen, and it is having an impact on the overall criminal justice system. So these were the issues which were outlined in this particular article, sir. If you see the whole issue, if I want to concentrate this article, they wanted to reform in the police system. If you see the second paragraph of the article, then they have given a lot stress on the technological aspect. First thing very important, the first time any prime minister has taken the interest. Before Narendra Modi ji, no one has taken the interest for the police reform. Second, how to go the better policing. For better policing, sorry, for better policing what to do. एक तो उन्होंने आउटलाइन किया इंफ्रास्ट्रक्चर का, दूसरा आउटलाइन क्या उन्होंने कहते हैं टेक्नोलॉजी का, तीसरा रेशियो ऑफ द पुलिस वर्सेस मैन. जो आपके क्रिमिनल है, जो आपकी जो मैन पावर है, उस मैन पावर की तुलना में कितने पुलिस फोर्स कितनी होनी चाहिए. और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो इसने फ्लैग नहीं किया है कि पुलिस के मोटिवेशन लेवल पे, पुलिस के हेल्थ इशू पे, अगर जो सबसे पैथेटिक पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि जो पुलिस की वैकेंसीज है अक्रॉस कंट्री में 5 लाख से ज्यादा है, वो भरी नहीं जा रही है. उसका कारण क्या है? तो जो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, अगर आप पुलिस के इस कंट्री में हमेशा क्या निकालते हैं, चिल्ड्रन टीचर रेशियो, डॉक्टर पेशेंट रेशियो, सेम वे योर पॉपुलेशन एंड पुलिस रेशियो.
अगर 5 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं, तो in that country where a lot of issues with respect to the anti-social activities, with respect to the terrorism, with respect to so many crime, the crime against women and girls, how चीज ऐड करो, एक चीज आप और ऐड करो कि हाउ मेनी लेडी पुलिस हैज बीन रिक्रूटेड। अभी हाल में एक न्यूज आई है कि पहली डीजीपी पंजाब में बनी है सिंस 1947। आजादी के 75 साल बीत गए, पंजाब ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेट में फर्स्ट लेडी डीजीपी बनी है। ये भी काफी बड़ी बात है कि ऐसा क्यों हुआ, हमारा किस तरह का अप्रोच है अपने पुलिस फोर्स में अदर जेंडर को लाने का। हाउसिंग, एक क्या हाउसिंग फैसिलिटी, पुलिस कॉलोनी कितने शहरों में है, और पुलिस का समस्या क्या है, पुलिस के जो लोग हैं अपनी सिक्योरिटी रीजंस के कारण वो कहीं बाहर जाके नहीं रह सकते हैं। अगर आप ये सोचो, पुलिस का आदमी किराए का मकान लेके कहीं रहे, पुलिस सबको मकान मिलता नहीं है, पुलिस कॉलोनी हर जगह क्यों नहीं बनती है। तो जो पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउसिंग का बड़ी बुरी हालत है, और यह एक डायरेक्ट इंपैक्ट। जो फिर आओ मोरल ऑफ द पुलिस फोर्स का मोरल कैसे बेहतर किया जाए। अगर आप किसी को बेहतर हाउसिंग नहीं दोगे, उसके बच्चे को आप एजुकेशन नहीं दोगे, उसकी फैमिली को सपोर्ट नहीं करोगे, तो हाउ यू कैन गिव ए मोरल टू द पुलिस पर्सनल। अगर कुछ साल पहले को देखा जाए तो एक नेशनल डेयरी ने डेली न्यूज किया था कि जो दिल्ली जो कॉप्स हैं वो रहते हैं हेल होल्स में, स्लम्स में रहते हैं। आप स्लम में रहने वाले व्यक्ति से कैसे बहुत बड़ी उम्मीद कर सकते हो। अगर यह हालत दिल्ली में है और जगहों पे क्या होगी। ट्रेनिंग का कोई सिस्टम नहीं है। जो एक स्टडी की गई है, only 6.4% पुलिस पर्सनल इन द स्टेट वेयर गियर इन सर्विस ट्रेनिंग। 2015 से 19 के बीच जो ट्रेनिंग दी गई है वो नहीं दी गई। तो आप इसको 4-5 कैप्शन में डिवाइड करो। एक, मोरल, बी, एथिक्स, सी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, E, housing and education to the children, F, recruitment। तो अगर हमको एक बेहतर पुलिसिंग चाहिए तो we need to address these basic issues of the police। आकाश, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है आपका? No, आकाश, sir. बोलो। No, sir. That's why no, sir. वीडियो में बात हो सकती है। इट्स फाइन ना? Yeah. आप यही चीज जो मैंने अभी और बोली है भावना के बोलने बाद आप सेम चीज आप बोलो। What is Yes, sir. required for a good policing in the country? Yes, sir. Sir, first we have to focus on basic infrastructure like providing good housing facility to the police personnel, as well as we have to recruit more police as the pile of vacancies are there, as well as sir, we have to provide a good transport and communication facility as well as forensic facility to increase the morale of police force. And sir, we have to focus on training. And our focus should be on more on field-based training and not on like just on or on academic sense. And sir, we have to also ensure to defining a new law which deals with federal crimes, as well as sir, and we have to use modernized operational autonomy. समस्या क्या है? You have explained everything. Why we are not able to give a good policing? What's problem? Sir, the issue lies with modernization of the police force, wherein most of the police force are not tech savvy also. So this is one of the major issue. Second issue is with respect to the support structure or the infrastructure that is required to be given.
to the policemen with respect to housing and education for their children, so that they can discharge their duties well. So we are lacking in this aspect. Third major issue is with respect to the motivation and the moral that the policemen would require. Since they are not having adequate infrastructure facilities, they are even not given proper leaves. Their health issues are also not attended. Would not be in the fit mental and healthy condition to render services to the public. Another major issue is with respect to the police population ratio or the increase in these. जब आप इस तरह के आंसर करो ना, तो Bhavana, whenever you answer any issue, you try to have the points in the mind. Sometimes what happens when we are control over the subject, yes, sir. we start speaking on the one point only and we left the other points. So when you start speaking, तो ऐसे मान लो example of this infrastructure, technology, moral, resources, ethical values, education, दिमाग में आप कराओगे तो एक एक ही बोलते जाओगे. Otherwise आप जैसे हम लोगों ने अभी क्या है, ये जो आर्टिकल है पूरा हम लोगों ने उसको डिसेक्ट कर लिया है. तो हम एक चीज बोलने लगते हैं तो उसी पे हम बोलने लगते हैं. तो जैसे ही आप 4-5 चीज लेते हो ना, और हमेशा किसी भी चीज को आंसर करते समय सोशियो इकोनॉमिक एथिकल इशू पर भी ध्यान दो. किसी को बोलो तो व्हेन यू आर स्पीकिंग समथिंग यू रिमेंबर माइंड कि वी नीड टू एड्रेस द सोशियो इकोनॉमिक एथिकल इश्यूज. तो जो मोरल ऑफ पुलिस फोर्स है, जैसे पुलिस फोर्स के काम, अगर किसी को आप 15 घंटे 16 घंटे काम कराते हो, हाउ द पुलिस फोर्स कैन बी फिट. बोला पुलिस फोर्स में फिटनेस की मेजर प्रॉब्लम है. व्हाई? दे हैव नो टाइम फॉर एक्सरसाइज. इफ यू आर यूजिंग देम द 15-16 hours a day, where they will find the time to exercise? Why other countries police force are fit and not this country? आप इसको भी रिसर्च करो कि और देशों की पुलिस फोर्स फिट कैसे होती हैं और हमारी पुलिस फोर्स बहुत फिट क्यों नहीं होती है. और जितने पुलिस रिफॉर्म कमीशन है उसको बारे में पता करो. एक आप होमवर्क दे रहा हूं, सीधे पुलिस रिफॉर्म कमीशन, मॉडल पुलिस एक्ट जो ड्राफ्ट हुआ है, व्हाट इज मॉडल पुलिस एक्ट, जो आज तक इनेक्ट ही नहीं हुआ है और इस पर कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ है. जो पुलिस ने एक पुलिस एक्ट बनाया था पूरी कंट्री के लिए. Why do we have a different acts for the different states? Why there should not be one police act for the whole India? हाउसिंग फैसिलिटी आप जरूर फ्लैग करना, बिकॉज एवरीवन नोज कि देयर इज नो हाउसिंग फैसिलिटी फॉर द पुलिस. देयर इज नो प्रॉपर ट्रेनिंग. The proper training need to give to every cop. They have issue. There is issue of the federal crimes. तो जो ऐसे क्राइम है, जो फेडरल क्राइम है, जिसके नेशनल रेमिफिकेशंस हैं, उसके अलग से काम किया जाना चाहिए. और पुलिस को आगे इस तरह तैयार करना चाहिए कि किसी भी क्राइम से, किसी भी सिचुएशन से निपट सके. देयर शुड नॉट बी एनी कॉम्प्लेसेंसी. अब पुलिस से हमको एक्सपेक्टेशन बहुत है कि हर क्राइम को सॉल्व कर दे, माओ की भी सॉल्व कर दे. या भावना, या वी हैव द एक्सपेक्टेशन. लेकिन हमारे पास उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते, रिसोर्सेज नहीं होते. यस, भावना हैज लेफ्ट. कुछ टेक आकाश. Yes, Akash, yes, sir. You answer in reply. How we can work for a better policing in the country?
First, we have to give them proper training, which much focused oriented on field and real issues and new crimes like cybersecurity. And then, sirs, we have to provide basic infrastructure facility to police, like housing facility, transport and communication facility, forensic facilities, etc. And we have to recruit the vacant post as early as possible. And sir, we can also explore Model Police Act for the entire country. And sir, we have to also ensure that there should be some work-life balance. Like there should no like very high hour of duty, around like 14 to 50 hours. It will also decrease the morale of police force. As well as sir, we can also explore some law related to federal crimes, to much coordination and cooperation between different state police force. Bhavana, you have replied the same question. How there is see the question. There is a lot of discussion about the improvement of the police forces. Suppose you are going to make a policy for the improvement of police forces. On which area you thrust? आवाज आ रही मेरी भावना? हेलो हेलो, तो भावना का फिर नेट काम नहीं कर रहा है. Akash? Yes, sir. Which is Yes, the sir. if among all you have listed so many points, if you have choose Yes, sir. only one, what is the most important among these? Sir, capacity building of police personnel. Yes. How you build the capacity building? So through providing quality infrastructure, training, quality remuneration in the form of balanced work-life in that sense, sir. And sir, recruitment, and sir, basic facilities like housing, forensic facilities, etc. So sir, in that sense, sir. Okay. Bhavana? Sir, capacity building can be first done by police modernization using technology. And the second major aspect would be the use of better training modules, going for more field-based training. And capacity also involves reducing the vacancies in police force and making the shift system better. Like it was in fact seen that the police will have 8-hour shift system, but unfortunately it did not work. So they can go back to the shift system to ensure that the policemen would be given adequate rest and leaves also. Probably the capacity building is very good word to start, because the capacity building will encompass everything. When you start with the capacity building, then capacity building will have the morale of the force also. It will have infrastructure also. It will have the technology also working on. If you start right this, so you are able to answer the question very perfectly. I think nothing left in this. कुछ और रह गया? Sir, no, sir. I have just noted down the commissions of police. हाँ, कौन-कौन से हैं? Sir, there are many, sir. If I have to read it out, there is first one. It started with Dharamveer Committee. Okay. In 1977. Okay. After that, we had Raiberio Committee. Then Padmanabhaya Committee, Prakash Singh judgment and the regulations after Prakash Singh Committee. After that, we had Malimat Committee and Soli Surabji Committee. So these many committees were, in fact, done for police reforms, but only a few states have taken up some recommendations which have been implemented. The major question can be, why are we not able to bring in police reforms? Like, despite having so many committees which are set up, still we are not able to do anything for police. So this can be one of the questions, sir. How you answer this? जो आपने कहा है इसको structure करो.
शॉर्ट में, क्रिस्प में। पहली कमेटी कब बनी है? पहली कमेटी कब बनी है? 1977। कौन सी कमेटी है? धर्मवीर कमेटी। हाँ, from 1977 Dharamveer Committee to the 2012-13 to the 2006 of the Soli Sorabji Committee, a lot committee has been formed by the government, but no committee recommendation has been yet implemented. And the Soli Sorabji Committee has given certain recommendation, and they have set the Model Police Act, which has been drafted. It has also not been enacted. Therefore, the recommendations of those committees need to be analyzed and implemented. Now they will ask what are the recommendations of those committees. आपको हर कमेटी को मत याद करना, 4-5 रिकमेंडेशन लिख लो, 3-4 कि सर I have read the various committees and सबका more or less एक ही तरह का होगा. These are the recommendations. The only recommendations are the infrastructure, the technology, the police moral, the working hours. These need to be regulated. मेरे ख्याल से इतने से satisfy हो जाएंगे कि the candidates are aware about the fact, and ये इसको इस बात की समझ है कैसे हम पुलिस रिफॉर्म को बेहतर करेंगे. Sir, the two major things which most of the committees recommended, sir. One was the separation of law and order from investigation. Okay. Because most of the police are in fact involved in giving bandobast to the security, law and order functions. So they are not able to adequately finish the investigation for crime in time. So this separation is required. The second major important thing is the use of police commissionerate system, at least in major cities, so that autonomy and independence of police would be there, and they need not wait. In fact, it will hasten the decision-making process. So these were the two common things which were recommended in most of the committees, sir. So this can be taken. In some part, these are being implemented. Yes, if you see in the UP, a lot of new commissionerates are coming. All big towns are having the commissionerate. To separate the investigation and the law and order is very important. So many agencies are doing. If you see the income tax and regular the work is different and investigation is different. The person who is doing the investigation, well, they are not aware कि country में क्या हो रहा है, कि कौन notified file क्या नहीं किया. बोला सर ये जरूरी है और this will जो capacity building है ना, आपकी बहुत help कर रहा है ये सब. बोले sir, it will enhance the capacity building of the police force. When we have the different set of the officers who are looking only for the investigation, then we are able to speed up the trial also. Investigation and law and order are two different things. The personnel who are looking after the law and order, if they find anything worth investigation, which the time required, manpower required, risk required, it can be referred to the special unit. And it will also help in the judicial process, and we will have the speedy trial, and we will able to comply with the mandate of the Directive Principal State Policy, where and the fundamental right, where the speedy trial is the right of a person. So now you try to rope in the Constitution also. Article 21 में कहा गया है speedy trial is a person's right, free legal aid person's right. तो speedy trial आदमी को होना चाहिए, होता नहीं है. किसी आदमी को जो इनोसेंस है, जो गिल्टी नहीं है, अगर उसका 10 साल से ट्रायल नहीं किया गया, तो इट्स ग्रेट इनजस्टिस विद हिम. तो आप इसे ऐड कर दोगे और बेहतर हो जाएगा. आकाश, यस सर, बोलो आपको क्या कहना है इसमें. Sir, I have one question regarding political intervention in police. So, yes, what are the issues and what can be the solution, sir? पहले बताओ कि आप इस पे स्टैंड क्या लोगे कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन होता है या नहीं होता है. Difficult question. बोलो. पहले तो आपको यही एड्रेस करना पड़ेगा कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन है या नहीं है. Sir, yes, to this extent, there is some political intervention. That's why in the past independent case, Supreme Court guided that there should be some separate board for the promotion, posting, transfer, etc. So, sir, yes, there is some political intervention. देखो, nobody, if you say there is no political intervention, the police force, तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा आंसर नहीं है. Might be possible any ex-IPS officer will be in your board. उसको सब पता है. आप बोलो कि सर
rather than to say political intervention here is not, we need to see how we can reduce it. There need to be a transparency in the transfer posting, need to be transparency in the कहते हैं in the transfer, need to be transparency in the promotion, timely DPC need to be done. पूछेंगे आपसे भाई आप बताओ ट्रांसफर पोस्टिंग को कैसे हम ट्रांसपेरेंट करें, बोलो सर देयर इज नीड टू बी ए कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने कभी रिकमेंड भी किया है कि कमेटी फॉर्म की जानी चाहिए, उस कमेटी के रिकमेंडेशन में ट्रांसफर पोस्टिंग जानी चाहिए, और हर आदमी का एक, हर अफसर का हर जगह का एक टेन्योर होना चाहिए. सपोज देयर इज टेन्योर ऑफ 2 years, then if you are transferring him before 2 years, then the reasons need to be recorded on the file, and generally there should be policy that the 2 year that the tenure posting need to be given a person. और अगर एक कमेटी बनाई जाए जो कमेटी इस बात को, बोलो कमेटी में कौन, बोलो कमेटी में 3 लोग, 3 सीएफओ कमेटी बना दी जाए सर, एवरी डिपार्टमेंट हैज कमेटी. बोलो अगर 3 आदमी न्याय नहीं, बोलो सर तब तो कोई सॉल्यूशन नहीं है कि सर देयर शुड बी कमेटी, there should need to there is a need of transparency, and the transfer posting promotion need to be in the time schedule, and sir there should be a reward for the good work. While doing the transfer posting, the work of the person need to be appreciated, his APR need to be seen, how many good work he has done. On the basis of those good work his assignment may be given. अगर आप देखें तो जनरली गवर्नमेंट सर्विस में ये बहुत ज्यादा इंसेंटिव नहीं है कि आपके अच्छे काम से आपको रिवॉर्ड किया जाए. अगर आप रिवॉर्ड करते हो, इट शुड बी गिवन फ्रॉम द जूनियर लेवल टू अप टॉप लेवल. जूनियर लेवल के अफसर अच्छे काम करते हैं, अनसंग हीरोज होते हैं. बताओ भावना, एनीथिंग मोर इन दिस? Sir, can we say that as we move towards a more mature democracy, wherein the politicians or the elected representatives will also be conducive and even they can understand the various requirements of policing, and they themselves will not go to interfere in the policing powers? So can we say that in the long term? When you say when we have a mature democracy, immediately a question may ask, India does not have a mature democracy? Then you cannot say we do not have mature democracy. Sir, we Therefore, are proceeding towards it. हाँ बोला सर, in place of mature democracy कोई और शब्द ढूंढो. Any other word? Any other word ढूंढो. The use of word is very important. Yes, sir. But as of now, I'm unable to think of anything. All I wanted to say was when the political representatives also are, they can understand and they can appreciate the difficulties of the officers, and they themselves will restrain their work to wherever it is limited, and they would not unnecessarily interfere in the working of the police or in administration. ये बड़ा खतरनाक आंसर है ये कि politician, when politician will understand, you are saying politician is not understanding. You always analyze your answer yourself. What is pitfall in the answer? If you are saying, first you said the mature democracy, it means the democracy is not mature. Then you have the only one option to say, I am proceeding towards the mature democracy. Then he'll ask you how you are proceeding, how much time you will take. तो ऐसे issues को लेके थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए. दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? जब आप पॉलिटिक्स अंडरस्टैंड, दे विल नॉट, इस सवाल को आप एक अलग डायमेंशन पे लेके जाओ कि सर reduce the discretionary power, have the transparency, apply more mind in one issue. If there is a committee to decide the issue, committee need to recommend the eligible officers. जैसे सीबीआई में होता है, कई जो होता है कि ये 3, 4, 5 एलिजिबल आंसर्स को वहां पे आप रिकमेंड कर दो. अगर वो आप रिकमेंड कर दो, उससे क्या होगा? देन देयर मे बी मोर. तो आप ट्रांसपेरेंसी पे ज्यादा प्ले करो, रादर देन कहना कि हमारी डेमोक्रेसी जब मैच्योर होगी या हमारे जब पॉलिटिशियन बेहतर समझेंगे. ये एक रिस्की प्रोपोजिशन है टू एड्रेस एट दैट टाइम. यस सर. आकाश आप बताओ.
Yes, sir. बोलो. We have to, yes, sir. Using discretionary power of the different entity, as well as we have to increase transparency to use of different technology. And yes, sir. But sir, I have another one question that there is Yeah. a gulf between the public and the police. So Yes. what can be the remedy to Yes. connect? Again, a good question. Like they feel. Yeah. Yes. Again, a good question. There is a. I'm just framing the Sir? sentence of. Can I just modify that question a little bit? Yeah. करो. Sir, can we say it is about the public perception of police? देखो, दो शब्द आया है. एक उसने आकाश ने बोला है गैप बिटवीन पुलिस एंड द पब्लिक. आप बोले हैं पब्लिक परसेप्शन अबाउट द इन द पब्लिक, द पब्लिक परसेप्शन अबाउट द पुलिस. जो गैप है पुलिस के बीच, तो है ही ना. पुलिस में और आम आदमी के बीच एक ट्रस्ट डेफिसिट है. पुलिस को लोग, जैसे गांव में जाओ तो लोग कोई पुलिस किसी घर जाती है तो लोग सावधान हो जाते हैं. पुलिस के आने पर कोई आदमी वेलकम नहीं करता. तो जो एक गैप है पुलिस का और आम जनता का, ये कैसे दूर किया जाए? तो ट्रस्ट डेफिसिट कैसे दूर किया जाए? आपका वर्ड क्या था? व्हाट यू यूज्ड? Sir, I said public perception. हाँ, तो पब्लिक परसेप्शन कैसे बना? बोले इफ यू से there is a not good public perception about the police, then you answer the question, who made this perception? Activities of the police. You cannot blame the public, he has the bad perception. आप ही तो कह सकते ना कि पब्लिक के पास जो पुलिस के लोग, चूंकि पब्लिक कभी गलत नहीं होती है. You cannot say the public is wrong. It is a, जब क्या ना, जब भी किसी बात करो तो एक आम जनता को दोष देने से बचने की कोशिश करो. तो जो पब्लिक परसेप्शन से जिम्मेदार तो पब्लिक है. देन अगेन रिफॉर्म. देयर इज अ नीड टू रिफॉर्म इन द वर्क ऑफ द पुलिस. पुलिस नीड टू बिकम द फ्रेंड इन प्लेस ऑफ द रेगुलेटर. ट्राई टू बिकम द फैसिलिटेटर. आप एफआईआर लॉन्च कराने जाओ, एफआईआर लॉन्च नहीं होती है. देयर इज अ लॉट रूमर इन द सोसाइटी कि unless you bribe you cannot lodge an FIR. You can lodge FIR. सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जजमेंट दे दिया था कि कोई जरूरत नहीं है, आप चिट्ठी लिख दो, आपकी चिट्ठी विल ट्रीटेड एज FIR. तो जो एक पुलिस का पब्लिक में परसेप्शन खराब हुआ है, द पुलिस फोर्स इटसेल्फ नीड्स टू वर्क. सिस्टम नीड टू इंप्रूव दिस. Reform need to the police. बोले क्या reform? बोला first of all we should understand our role. Our role is not the regulatory only. We are the facilitator. We are the helper. If anybody is coming the police thana, he or she needs to be welcome. Every public is not thief. The treatment which are doing with the anti-social elements need not to be given to the armed public. पुलिस मेले लगाए जानी चाहिए. पुलिस की कहते हैं पुलिस जाकर लोगों से मिलनी चाहिए. जनता और पुलिस के मध्य ज्यादा से ज्यादा संबंध की स्थापना हो. देयर मोर डायलॉग इन पुलिस एंड द पीपल. एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. एक दिन दो दिन नहीं हो पाएगा. यू नीड टू डू रेगुलर बेसिस. और इवन इन ट्रेनिंग दिस नीड टू बी इम्पार्टेड कि आप सिर्फ साहब नहीं हो, आप जनता के साथ करने वाले आदमी हो. आकाश क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Any more doubt? Sir? No. Sir, so can we frame it like that the police should need to understand their role rather than just being the regulator? They are the facilitator of public services. आप इसको ऐसे कर सकते हो सर. The day person is joining the police force from any academy, whether it's the National Academy for the IPS, PPS officers, or the sub-inspector, or the normal policeman, in the training this need to be imparted. Your role is to help person. Your role is to have the confidence of the person. Your role is the builder. सर जो capacity building क्या है? If
if the public and police is not having the faith amongst other, then there's no capacity building. Capacity building will only when there is a support mechanism. कोई आदमी पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, बोला सर पहले क्या होता था, लोगों का एक्सीडेंट होता था, लोग उसको अस्पताल नहीं पहुंचाते थे, पुलिस तंग करेगी, तब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, अगर याद हो, कि आप किसी को अस्पताल पहुंचाओगे तो आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। बोला सर ये क्या है, ये एक जो समाज में जो ये परसेप्शन इसको दूर करना है कि पुलिस परेशान करेगी, दिस परसेप्शन नीड टू रूल आउट। कैसे रूल करोगे सर, ओनली वे आउट, पुलिस शुड कम फॉरवर्ड। So we can say sensitivity and increasing the recruitment of women. Yes, very good point. अब मैं इसी पे आ रहा था, बोला सर the women need to be given the lead role for this balancing the trust between the man and the population and the police. पुलिस की ट्रेनिंग में, पुलिस की योगा में, मेडिटेशन में, पुलिस को थोड़ा सा सर इथिकली भी स्ट्रांग करना चाहिए, इथिकल मॉरल ग्राउंड पे काम करना चाहिए। Sir, and another major question which comes in mind is with respect to corruption in police forces. करप्शन क्यों होता है? पहले Sir, करप्शन क्यों होता है? Sir, something like speed money also, or in fact to get away with the petty violations in traffic. So for these two reasons, most of the constabulary, they will accept bribe and they are ready to let go of the person who has committed any traffic offense. करप्शन को रोकने का आपके पास क्या सुझाव है? Sir, transparency and technology. Reducing the discretionary power? Yes, sir. Making the rules for the various, जैसे मान लो कोई आदमी FIR लॉन्च कराने आया, आप वहां पे कैमरा इंस्टॉल करो, पुलिस फोर्स में हर जगह इंस्टॉल हो गया है, you see FIR has been lodged or not, इन कैमरा इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। आकाश आप बताओ कुछ। आकाश बताओ। आकाश कुछ करो बेटा, अपने नेट का यार। सॉरी सर कुछ नेट का कोशिश, नेट क्यों नहीं चलता आपका? जरा डेटा देखो, क्योंकि आप देखो मेरा और भावना का कोई दिक्कत नहीं आता है। भावना आप क्या यूज करते हो, वाईफाई और डेटा? मोबाइल डेटा सर। देखो मोबाइल डेटा उसका भी आ रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा है? और कोई सर नहीं, क्या है आकाश, नुकसान हो जा रहा है ना डे का, मतलब आपकी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही ना, इस कारण से आपको बोलने का जो चांस है वो मिस हो जाता है ना बार बार। भाई अपनी ट्रेनिंग का बहुत बड़ा पार्ट क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा बोलो, यही है ना सबसे बड़ा पार्ट अपना, तो कि आप सेम चीज को आप कई तरह से बोलो। नेक्स्ट और क्या टॉपिक है? हाँ चलो भावना नेक्स्ट बताओ। मेरे ख्याल से हो गया ये। यस सर। हम लोग इसमें 45 मिनट हमने टाइम दिया, 40 मिनट इसमें। Sir, but we finished most of the other peripheral problems. Yes. Almost, yeah. Yes. Next topic क्या है? Sir, there is another article on Uniform Civil Code, Common Code Conversations. किस पे है? This 13. Yeah. Let me check the act. One minute. चलो शुरू करो, क्या कहा इन्होंने इसमें? Sir, the overall gist is that there are various differences in the personal codes of different religions. Although it might not be possible at this moment to bring in a uniform civil code, but it is the right time to start discussing about such a code. So in that, the author has outlined 4 major issues related to marriage, inheritance, and adoption.
Sir, first, it is outlined that most of the UCC discussions have been focused largely on marriage. And even in the case of marriage also, there are different marriage laws for different religious communities. Like in South India, the cousin marriages are allowed and even parallel cousins marry among Muslims. Whereas in North, that is not the case. There are differences wherein they don't even marry within the same village, or they forbid marriage is based on sapinda. So these are the issues which will come if you are thinking about marriage. The second aspect is that of inheritance. Even in inheritance, the Hindu inheritance rights, it distinguishes between separate property and co-parcenary joint family property. So even in this, even among the Hindu code bill also, there is a difference in matrilineal societies and patrilineal societies. So the laws of inheritance are not common there. Then there is the inheritance laws of Hindus, Christians, and Parsis, and they are gender equal. However, the Muslim law is not gender equal, where the woman is given a lesser share than that of man. Then fifth is with relation to the land, how land is going to be divided, because it is being seen as a property in some of the personal laws, whereas it is not seen as a property. In Muslims, the agricultural land is excluded from the purview. So there are these many differences. Even if you are talking about the inheritance or marriage, in enacting a uniform civil code. Sir, other than this, there are different aspects of Dayabhaga and Mitakshara, even in the Hindu code bill, which will again create variations. So the author is concerned about how is all this going to be tackled. And previously, the issue of UCC was based on gender equality, whereas now it has shifted its focus from gender equality to more of identity-based politics. So this is also another issue, sir. So she has spoken about the overall issues related to Uniform Civil Code. अरे आप 3-4 चीज लिखो। आकाश? Yes, sir. हाँ, पहला, why uniform civil code needed? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है it is imperative for both protection of the oppressed and promotion of national integrity and unity. केस का नाम बताने की जरूरत नहीं है, अगर चाहो आप लिख लो, सरला मुदगल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इफ यू वांट टू गिव, इफ अगर आपको डिस्कशन में आवे, देन यू यूज के सर सुप्रीम कोर्ट आल्सो सेड। तो पहली बात क्या हो गई कि जो आर्टिकल 44 है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, it is the desire of the constitutional makers. I read the article, ये आर्टिकल उतना अच्छा था नहीं, क्योंकि आर्टिकल जिस बात पे गया था वो आपके इंटरव्यू में बहुत हेल्प नहीं कर रहा था, बल्कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट बात कर रहा है, अगर ध्यान से देखो तो। यस सर। ही इज फ्लैगिंग द इशू कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं चाहिए। यस सर। हम इसके उल्टा चलते हैं कि पहली बात क्या है, आर्टिकल जो 44 बोलता है कि स्टेट टू सिक्योर फॉर सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, the constitution has mandated it need to be done. Second question, why constitution needed it? Because it is imperative for protection of the oppressed and promotion of national unity and integrity. Unless until you have uniform civil code, you won't able to have national unity and integrity. Sir? Yeah. So can we, sir, is it right to say that uniform civil code helps us to get social, economic and political justice? Yes, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। Yes, उसी तरफ आ रहा हूँ मैं। अभी आप देखो कि जो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, उस डायरेक्शन का फर्क क्या रहा है। जो हिंदू हस्बैंड मैरिड अंडर हिंदू लॉ आफ्टर द कन्वर्जन टू इस्लाम विदाउट डिसॉल्विंग द फर्स्ट मैरिज could solemnize the second marriage. It is against the concept of the humanity. आप एक महिला के साथ अन्याय कर रहे हो। जब कोर्ट ने जजमेंट दिया था, कोर्ट ने इसी में ऑब्जर्व किया कि
क्या एक हिंदू husband married under Hindu law after conversion to Islam without dissolving the first marriage could symbolize the second marriage? कोर्ट ने बोला such a marriage would be illegal and the husband could be prosecuted for bigamy under section 494 of the Indian Penal Code. तो आप क्या करोगे? सर, if you see this scenario, does it justifying the existence of the woman in the society? Second, a Hindu marriage continues to exist even after one of the spouses has converted to Islam. There is no automatic dissolution of Hindu marriage. जो उन्होंने आर्टिकल लिखा है, I am just demolishing her argument. जो मैडम बीना अग्रवाल का आर्गुमेंट था, I am just demolishing all the arguments he has given. कि जो हिंदू मैरिज है वो कंटिन्यू करती, एग्जिस्ट करती है even after one of the spouse has converted to Islam. There is no automatic dissolution of the Hindu marriage. ये डिसॉल्व कब हो सकती है? Only when there is decree of the divorce of any of the ground elaborated in section 13 of the Hindu Marriage Act. अब try to see the article 44 of the Constitution, which is based on a concept that there is no necessary connection between religion and personal law in civilized society. बोला sir, I want to highlight this, I want to stress this. ये भी जस्टिस कुलदीप सिंह की लाइन है कि आर्टिकल 44 is based on the concept that there is no necessary connection between religion and personal law in a civilized society. Marriage, succession, and the matters which are similar to that are a secular nature and can be regulated by the law. For that, we need the Uniform Civil Code. Sir, why there is a lot of hangama in India only? In many Islamic countries, Syria, Tunisia, Morocco, Iran, Pakistan, other Islamic countries have codified their personal law to check its abuse. Sir, it will check the abuse of the personal law. And the practice of polygamy, which is being promoted, is injurious to the public moral and health both. Sir, it goes against women rights also. Yes. और जो आर्टिकल 44 है, ये इस premise पर based on premise that there is no necessary connection between religion and personal law in a civilized society. Article 25 and 44 both need to be seen together. Article 25 and 26 only protect those rituals and ceremonies that are the integral parts of religion. I'm just trying to analyze Article 25, 26, and 44 to build a case why 44 is needed. तो फर्स्ट क्या बोलो, जो आर्टिकल 25 और 26 है has no application as this because property, क्योंकि इसका कोई उससे कनेक्शन नहीं है. 25-26 क्या है? ओनली प्रोटेक्ट दोज रिचुअल्स एंड सिविल दैट आर इंटर पार्ट ऑफ रिलीजन. और जो कॉमन सिविल कोड है आर्टिकल 44, यह इस प्रीमाइस पर है, देयर इज नो नेसेसरी कनेक्शन विद रिलीजन एंड पर्सनल लॉ इन सिविलाइज्ड सोसाइटी. अब नाउ compare Article 24 or 44. So 25, 44. Article 25 guarantees religious freedom, and Article 44
divest religion from social relations and personal law. लिखो आप इसको 25 and 44. And sir, all marriages, irrespective of their religion, need to be compulsory registered. अब आते हैं कॉमन सिविल कोड का फायदा क्या क्या होगा। पहला, प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस। अभी हाल में हंगामा हुआ है, जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक लड़की को, एक गर्ल को प्यूबर्टी में ही आपने शादी के लिए बोल दिया। तो प्यूबर्टी कितने साल में आ रही है आजकल? 11-12 साल में। 10 साल में आती है। तो 10, 11, 12 साल की लड़की अगर शादी करते हो, उन्होंने जो जजमेंट दिया था, दिस जजमेंट वाज ऑन द बेस्ड ऑन द मुस्लिम लॉ। इफ यू आर अप्लाइंग कॉमन सिविल कोड, पहला सर प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, आप दोनों को जोड़ना। नंबर 2, check bigamy and polygamy. Third, it helps women to exercise their rights under marriage, maintenance and custody of children. Fourth, it enables widow to claim inheritance. आकाश, लिख पा रहे हो ना आप? Yes, sir. आकाश, Yes, sir. अब Yes, sir. लिख रहे हो ना? हाँ। Yes, sir. Enables widow to claim inheritance. और last, deter husbands for deserting their wives. ये पांचों सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं, इसलिए अनक्वेश्चनेबल है ये। बोलो सर, कॉमन सिविल कोड इज फॉर द वुमेन्स राइट, फॉर द नेशन इंटीग्रेशन, फॉर कल्चरल एसिमिलेशन, अगेंस्ट द मॉरल, अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ द फीमेल जेंडर। अब इसी को आप लोग स्ट्रक्चर करो। पहले आकाश से कराते। आकाश, आकाश, why we need a common civil code? Why we need a common civil code? मतलब ये आर्टिकल जो था कॉमन कोड का बहुत खराब आर्टिकल था। आप देखो ना, Yes. जो आर्टिकल कह रहा था, जो मैंने बताया, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इस आर्टिकल ने वन साइडेड लिखा। सबसे खास बात क्या है, एक वुमन ने आर्टिकल लिखा है ये, एंड शी हैज नॉट हाईलाइटेड एनी इश्यूज व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड बाय द कोर्ट। आकाश बोलो। Yes. Why we need a common civil code? Yes, sir. First, for the gender equality, because the personal law are very discriminatory in nature, as well as sir, if you want to make egalitarian society, and if you want to abolish patriarchal norm sets, then we have to implement uniform civil code. So second, as there is a practice of polygamy and child marriage, so it is detrimental to public health and morale. So sir, we have to definitely implement UCC. And sir, to promote national unity and integrity, as well as to encourage scientific temper among the citizens of India, we have to implement this sir code. Why you are using scientific temper, Akash? And to reduce Akash, why Sorry, using sir? scientific? Why using scientific temper here? आपने Yes, सारा आंसर because, अच्छा sir, किया। civil matters. Yes, sir. यूनिफॉर्म Sir, because in यूनिफॉर्म सिविल matter, कोड, there should be नहीं, यूनिफॉर्म सिविल sir. कोड लाने से Because साइंटिफिक टेम्पर कैसे आ रहा है? Sir, because we will not like surrender the religious norms, like practicing polygamy or practicing No. early child marriage, but instead of we will separate. Sorry. एक सवाल का जवाब दो। आपने यूज किया इट विल इनकरेज द साइंटिफिक टेम्पर।
How scientific temper is coming here? So because the civil matter will be separated from the religion and the secular nature No, will be Akash, highlighted. And that's no, why people Akash, will- no, Akash, give the pointed answer. Why you use the word scientific temper here? Sir, because I thought that when there marriage, adoption, or inheritance, there will be no any influence of religion, then people will be naturally inclined towards secularization. That's why, sir, I said that it will encourage scientific temper. Like child marriage is not like scientific at all, but due to religion, we are just pressing that yes, we should do that. That's in that sense what I'm telling. Bhavana, bolo. Sir, uniform civil code is needed because it was the desire of the constitutional makers who in fact included it under the directive principles of the state policy. And it also gives protection for the oppressed, and it promotes the secularism and integrity in the society. It enables the women rights. It would prevent the occurrence of child marriages. It would also prevent polygamy and bigamy. Um, it would prevent, and then it would give the women the rights of custody of their children, aspects of maintenance and in the marriage. Also, it would help the widow to claim her inheritance, which might be not available right now. And one more major aspect is that it would, in fact, reduce the husbands from deserting their wives. So these would benefit, and it would help women empowerment. So this is one of the major reasons why UCC is required in India, sir. आप लोग 4 लाइन लिखो जो आपको जरूर बोलनी है. लाइन नंबर 1, प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. Point number 2, no necessary connection between religion and personal law in civilized society. Number 3, marriage, succession, and like matters are of a secular nature. Therefore, they can be regulated by law. So many activities like practice of polygamy, bigamy are injurious to the public morale. Article 25 guarantees religious freedom, and Article 44 diverse religion from social relations and personal law. The benefit of the Uniform Civil Code: A, prevent child marriage; B, check bigamy and polygamy; C, women's right; D, deter husbands from deserting their wives. इतना आप लोग याद करना. इससे आप लोग सेल थ्रू कर जाओगे कॉमन सिविल कोड पे कोई सवाल आएगा तो. ठीक है? Yes, sir. Sir? हाँ बोलो. One major question is that wherein when we are getting uniform civil code, it will lead to the uniformation of the different cultural practices. But I feel that it is not so, because we are only having a uniform civil code to regulate marriage, succession, adoption, and inheritance. Whereas the cultural practices that take place during marriage or during succession or any of that sort, that can continue as it is. So right now, if we look into the Hindu code bill, it is being codified. But however, in marriage, whatever rituals they want, they are performing the marriage according to their rituals, and later on they are getting it registered. So this need not be a concern.
So can we say that, sir? What Like do you want it- to say? Sir, I just wanted to say that there's a question that it will lead to uniformity in the cultures and aspects which is related to marriage. So I would like to say that it is not so if we bring in a uniform civil code. सुप्रीम कोर्ट आपको उल्टा बोल रही है, मैंने पहले लिखाया नेशनल यूनिटी, पहला लाइन याद करो। Yes, sir. सुप्रीम कोर्ट का पहला लाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, पहला लाइन बोला हुआ है। Yes, sir. Promotion of integrity. नहीं, क्या है फर्स्ट लाइन पढ़ो, जो फर्स्ट लाइन अभी लिखाई है। Imperative for the First line. protection of oppressed and promotion of integrity. ना, Promotion of national unity and integrity. या प्रोटेक्शन ऑफ ऑपरेस एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो जब आप नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी में कल्चरल यूनिटी शामिल है, कल्चरल यूनिटी इज पार्ट ऑफ इट। अगर आप कल्चरल यूनिटी नहीं ले पाओगे, नेशनल यूनिटी हो पाएगी। इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, रिलीजन। Unless until you have a culturally united country, you cannot have national unity. We may have different culture, but there may be certain meeting point in that. Whereas a common civil code will help us. Our inheritance system, our marriage system, our divorce system, so many things will come under the one umbrella. And culturally, we are coming closer to each other. Today, there is a provision for Hindu and Muslim boy and girl. If you want to marry, you change the religion. Suppose there is common civil code. There's no requirement for that. अगर कॉमन सिविल कोड में ये रिक्वायरमेंट आ जाता है तो आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपको कल्चरली क्लोज नहीं ला रहा है। जस्ट थिंक। Yes, sir. हाँ, बताओ। Yes, sir. I understood the point now. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट केस क्या है? जो नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला क्या है? Sir, Colombo, the view from Delhi. किसी में है? इसमें एक्सप्रेस नहीं है? Yes, sir. It's on explained page. ओके, ईशा, आप लोग डिस्कस किए हैं एक बार थोड़ा सा? Yes, sir. We have done this, so it is almost similar, sir. फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है ना? शॉर्ट में बताओ क्या है इसमें, बताओ। आकाश, आप पढ़ा इसको? Yes. आकाश, आप थोड़ा नेट ठीक करो बेटा, क्यों नहीं आता नेट? कहाँ से करते हो आप? मी भावना, यू I don't know why. Mobile क्योंकि data. मोबाइल से भावना भी कर रही है, कई बार मैं भी मोबाइल से करता हूँ। हाँ, बताओ तो क्या है, बताओ। Sir, one thing is that there has been a recent meeting of External Affairs Minister with Sri Lanka's President in Colombo on January 20th. So during that, there were 3 focus areas which were discussed. Main was that India will also support the Sri Lankan economic recovery. And also we have given an invitation to the President to visit India. Whereas earlier there was a convention that any Sri Lankan president would have the first visit to India. And also we have conveyed what are the expectations that India has from Sri Lanka. So these were outlined in this particular article, sir. आप लास्ट पे आओ, पहले क्या डिस्कस, पहला क्या हुआ? फर्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी। Yes, sir. तो उसमें क्या करेंगे? दोनों कंट्री एग्री कर गए इन प्रिंसिपल ऑन ए रिन्यूएबल एनर्जी फ्रेमवर्क, वो कोऑपरेट करके बाहर। और दूसरा 13th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्टेड प्रोविंशियल काउंसिल्स की बात हुई थी, जो इंट्रोड्यूस हुआ था जब इंडिया ने 87 में इंटरवीन किया था श्रीलंका में। It is the only concession in the constitution on Tamil demand for the devolution. तो जो तमिल डिमांड डिवोल्यूशन ऑफ पावर है उसकी बात कर रहे थे। अब अमेंडमेंट क्या है? अपोज करा था बोथ। जो अमेंडमेंट अपोज्ड बाय द
सिंघली बुद्धिस्ट नेशनलिस्ट, वह कर रहे थे। और नाउ वाज इंटेंड टू क्रिएट ए प्रोविंशियल काउंसिल श्रीलंका तमिल नॉर्थ ईस्ट। अब जो श्रीलंका, जो उस समय सिंघली और बुद्धिस्ट एक तमिल नॉर्थ ईस्ट को वो जो एक इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जो अपोज कर रहे थे, अब वह इंट्रोड्यूस करने को तैयार हो रहे हैं। और जो फर्स्ट प्रोविंशियल काउंसिल थी वो बहुत दिन तक चल नहीं पाई। तो जो जयशंकर जो वहां गए, जो वहां पे गए, जो 13 अमेंडमेंट था, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट रहा इस बारे में। मेरे ख्याल से 3 पॉइंट है, क्या कोई पॉइंट है? Sir, only these 3 points. And another point is that we have given Sri Lanka 4 billion aid immediately as soon as we realized that they were not Yes. in a good economic condition. Yes. So we can say Akash? that we have Yes. followed our Akash? neighborhood Yeah. first policy. Yes. आकाश बोलो। Yes, sir. आकाश, हाँ बोलो। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यही चीज आप बोलो, सेम चीज आप बोलो। You speak the same thing. India tried to bail out India, Sri Lanka, from economic crisis. Like it provided 4 billion bailout package in its neighborhood first principle. As well as, sir, India has been clear that regarding cooperation in different sectors like energy security, food security, there is a scope for the renewable. नेक्स्ट क्या है भावना? आवाज नहीं आ रही उसकी, आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट क्या है? Yes. Sir, should we go through the absence of a new COVID surge? The reasons why Yes. India has, there is nothing in that, sir. ना, कुछ नहीं है, कोई पॉइंट नहीं। Sir, next in Hindu, there are two very important articles. One is the new and dark interpretations of we the people. ये मेरे ख्याल से उनके स्पीच से आया है ना, कहते हैं चंचूड़ के, क्या है बताओ? Sir, I did किस not पेज पे? I did not understand it completely, sir. किस पेज पे है? Sir, it's on page number 6. इसको मैं पढ़ा नहीं है, तो लेट मी रीड, इसको कल करते हैं, ठीक है ना? लेट मी रीड Yes, sir. दिस। Yes, ओके, sir. हाँ, नेक्स्ट बताओ। Sir, working hand in hand to showcase India. ये किस पेज पे है? 6th page only, sir. It is there below. And in fact, this tells us about the tourism policy. Today is National Tourism Day. यस, ये अच्छा आर्टिकल है। देखो क्या है, टूरिज्म पॉलिसी में फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है इस समय? व्हाट इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट? ये पॉलिसी पहले भी आ चुकी है। व्हाट इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट? क्योंकि ये पॉलिसी आई है आफ्टर कोविड-19, तो आफ्टर कोविड-19 एवरी पॉलिसी हैज द इंपैक्ट ऑफ द कोविड। तो बात क्या बोल रही है बताओ? Sir, in fact, it says that India is a geographically very diverse country and its potential for tourism is in fact untapped. We have high mountains, beaches, deserts, and even historical tourism, medical tourism. So the potential for tourism is immense. What we need to do is we need to attract tourists to visit India by carefully marketing the tourism potential that India has. So it is focused on this, and also it talks about the various government schemes that have been taken to promote tourism. एक तो आप इसको इंडिया के हिस्ट्री से जोड़ो। आप मैप में जाना, एक मैप में रास्ता बना है कि वेनसांग किस रास्ते से आया था, फायांग किस रास्ते से आया था। आप मैप में इस चीज को आप देखना। Yes, sir. दूसरा, कौन कौन से टूरिस्ट आए थे, उनकी किताबें कौन कौन सी, क्या क्या उन्होंने लिखा है, बहुत डिटेल में पढ़ना, सिर्फ एक तरफ से लुक जाना होगा। इंडिया का जो कल्चरल कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में क्या क्या है, रिलीजन का, सभ्यता का,
टूरिज्म पॉलिसी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इन्होंने इसमें नहीं लिखा है, जो टूरिज्म पॉलिसी थी उसमें एक लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी की बात कही गई थी। Yes, जो sir. मैंने पिछला पढ़ा था कि जो हमारे टूरिस्ट आते हैं उनकी सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जाना चाहिए। जो हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात चल रही है उसमें हमारा टूरिज्म हेल्प कर सकता है। We can earn a lot foreign exchange from the tourism. We have a lot of cultural places which need to be tapped. Present government is stepping a lot place. प्रयागराज को क्या कि प्रयागराज है, बनारस है, साउथ में हम्पी है, मदुरई है। हमारे जितने डांस के फोक डांस के पीसेस हैं, एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। टूरिज्म में स्टेट और सेंटर के बीच में एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंटशिप है। इंडिया टूरिज्म में उसमें उसको चैंपियन करे, प्रमोट करे। जगन्नाथ यात्रा मेरे पास है। हमको अपने पड़ोसी देशों से, अपने यहाँ के सबसे एक कल्चर एक्सचेंज करना चाहिए, टूरिज्म इनवाइट करना चाहिए। टूरिज्म को एक हम सिलेबस का पार्ट बनाएं। जो यूथ है उनको हम ट्रेन करें। यूथ को ऐसा ट्रेन करें कि जो टूरिस्ट, जो हमारे पास जैसे एक सभी हाल में प्रधानमंत्री ने बोला, बनाया था चीता मित्र, याद करो वहां पे जब वो MP में गए थे, जब चीता आए थे तो चीता मित्र बनाया था। ऐसे ही हमको टूरिज्म मित्र बनाना चाहिए कि जो टूरिज्म के लोग आवे, उनको हम कैसे वेलकम करें। इससे प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। और दे विल बी द एम्बेसडर ऑफ आवर टूरिज्म इंडस्ट्री। जो अपने पास जो वाटरवेज हैं उसको टैप करना चाहिए। सरकार ने शुरू भी किया हुआ है। और टूरिज्म को लाइफ स्टाइल का पार्ट बनाना चाहिए। उससे हमारा नेशनल इंटीग्रेशन होगा, कल्चरल एसिमिलेशन होगा। वी आर नॉट सीइंग टूरिज्म ओनली एज आउटसाइडर, इनसाइड भी प्रमोट करना चाहिए अपने को। Although we want foreigners to come, they give foreigners, we need to promote our culture. हमको टूरिज्म को पार होना चाहिए। बहुत महंगा नहीं होता, लोग घूमे, देश को देखें, देश को समझें। जब एक जगह का आदमी दूसरी जगह, तो हमारा आपस में संबंध होगा। हम लोग भाषाएं ज्यादा सीखेंगे। जितना सोचते जाओ इसका एंड ही नहीं है। इट्स सच अ गुड टॉपिक। हमारी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी। हम अर्न करें, जब हम स्पेंड करेंगे तो क्या होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और कुछ? आकाश नो सर। Sir, बताओ कुछ, कोई इशू? हाँ बोलो। sir, we can talk about domestic tourism also. यस, कहा ना, तो जरूरी टॉक करना तो मस्ट है। जब भी कोई टॉपिक टच करो, होलिस्टिकली टच करो, ट्राई टू enlarge it. Sir, आकाश, हाँ बोलो। sir, then one question will be, what are the issues that tourism is currently facing? एक One तो is आप बोलो कि security. सिक्योरिटी बड़ा इशू है। इसमें कह रहा हूं कि टूरिज्म पॉलिसी में है वो, शायद मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा था पिछली बार। लो बजट होटल्स, सरकार के जो गेस्ट हाउसेज हैं उसको अगर खाली रहते आम आदमी को दिया जाना चाहिए। लोकल फूड और क्यूजीन को प्रमोट किया जाना चाहिए। इजी ट्रांसपोर्टेशन मिलना चाहिए। जैसे जो हमारे रिमोट एरियाज हैं
उनको कनेक्ट करना चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, टूरिज्म मेले लगाने जाने चाहिए। Sir. Hmm. And another what I noted was that each state has started branding and promoting their tourism. It's good idea. Yes, sir. So Yeah. that can be marketed on a global level also and at a Yes. national level also. Yes, yes. How Karnataka does one state, many worlds, or Madhya Pradesh is the heart of India. So like these, when they come up with captions and when they promote whatever tourist potential their own state has, then it can attract even domestic and international tourists. You put it in this way, India is the land of diverse culture, diverse identity, diverse, beautiful locations. Every state, every area has some specific point to showcase that need to be promoted. And the union government support this promotion aspect. अब 26 जनवरी को झांकी निकलती है, सारे प्रदेशों के सारे जगहों की अच्छी बातों को पेश किया जाता है. That need to be taken on the global level. और एक फ्रेंडली पॉलिसी, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए. आकाश, आकाश, हाँ बोलो कुछ बेटा. Yes, sir. That Delhi. आकाश आप एग्जिट करके फिर से आप ज्वाइन करो. आकाश आप एग्जिट करो फिर ज्वाइन करो, जो शायद ठीक हो जाए. हाँ आप एग्जिट करो फिर ज्वाइन करो. या Sir. हाँ बोलो. Sir, with respect to Delhi, there is a tourism police. Yes, yes. Am I जो आपने audible, sir? हाँ हाँ आवाज आ रही. हाँ आ रही आवाज, आ रही. I'm hearing you. Tourism, yes sir. Yes sir. So that tourism police. अब भावना आप एग्जिट करके फिर ज्वाइन करो, आपकी आवाज चली गई. यस आकाश. आकाश. Yes, sir. Yes, sir. Emulated in different states also. हाँ आकाश बोलो आप. आकाश. Sir, how can we use? Yes, sir. How can we use our Indian diaspora much efficiently to cater non-Indian like foreigner to visit India, sir? Like, what can we argue? As our Prime Minister said in Denmark that he urged the Indian diaspora to inspire at least 5 of their non-Indian friends to visit India. So, sir, how can we like? For that, the Indian culture, Indian beauty, Indian friendly tourism atmosphere need to be talked on the world forum. The foreign service officers also may take interest in that. And every Indian, Prime Minister has said a very right thing, every Indian living abroad try to communicate the message that India is a land where one need to go. हमारे पुराण बोलते हैं ना कि जिसने यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त कर ली, जिसने यहाँ दर्शन कर लिया, जो यहाँ आ गया, उसका जीवन तर गया. आपने सुना ही होगा ना ये कि जो प्रयाग चला गया, जो काशी चला गया, जो गंगा सागर चला गया, जो रामेश्वरम चला गया, उसका जीवन तर गया. सुना था आप लोगों ने? हमने सब सुना है. तो इस तरह की बातों को प्रचारित किया जाना चाहिए कि एक ऐसा देश है जहां जाने से आपको
ईश्वर का वास होता है, आपको शांति प्राप्त होती है। आप न केवल सुंदर, यू आर नॉट ओनली सीइंग द ब्यूटी ऑफ द एरिया, you are experiencing it. You must go see how peace is provided by those areas. Land कितना peace देती है. So just try, this type of the message need to be spread, and these messages will certainly convince to the people to come to the India, because there is a lot interest in India to come. विदेशों में इंडिया होने में बहुत इंटरेस्ट है. We need to accelerate that process. As much as we are able to accelerate the process, more tourists we will get. But on the same time, we need to have infrastructure to tackle that. Bringing the person here, inviting the person is one part. Making them comfortable here, giving them respect here, giving them security here, giving them proper structure here. It's our job. We need to do it. So on the both front we need to do. The first front, we need to convince them by so many ways. Second, we need to create a proper infrastructure, affordable infrastructure. और इंडिया का टूरिज्म बहुत महंगा नहीं माना जाता वर्ल्ड में, क्योंकि डॉलर और रुपये का एक्सचेंज रेट बड़ा हेल्प करता है. Yes, Akash, anything more? Yes. Yes, भावना, हो गया? कुछ रह गया बचा इसमें? Sir, a chance for peace. क्या है? Sir, recently the Pakistani Prime Minister in fact said that he has learned his lessons. हाँ, इसको आप जब नहीं, हम लोग डिस्कस भी किया था, उसका आप रिकॉर्डिंग सुनना. शेखर गुप्ता का हम लोग आर्टिकल, हाँ, शेखर गुप्ता का आर्टिकल, उसको हम फिक्स कर लेते हैं. देख क्या है, पाकिस्तान ने एक बात बोली है. पाकिस्तान, just listen to 2 minutes, then I will start the interview part. पाकिस्तान ने क्या बोला? पाकिस्तान ने एक ऑफर हैं, युद्ध से कोई फायदा नहीं होगा, तो हमको एक पीस की तरफ बढ़ना चाहिए. अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि पाकिस्तान जो बोल रहा है कि वी नीड टू हैव ए पीसफुल एटमॉस्फेयर, वी हैव ए फ्रेंडली रिलेशनशिप विद इंडिया, डज इंडिया गो फॉर दिस और नॉट टू गो फॉर दिस? बताओ. Sir, in fact, India has invited. आवाज नहीं आ रही भावना आपकी. Sir, am I audible now? Sir, बोलो. am I audible? या Sir, India has taken a आवाज नहीं आ stand. रही भावना, आवाज नहीं आ रही है भावना. आप एग्जिट करो, फिर आप इन करो. Hello, sir. Sir, am I audible now? या साउंड प्रॉब्लम है भावना. साउंड देखो, साउंड. मेरी आवाज आ रही ठीक से? आवाज आपकी भी आ रही है, Yes, भावना sir. जी की भी आ रही है. आपकी आवाज धीरे आ रही है. Sir, is it proper now? नहीं आ रही है. आप एग्जिट करके इन करो.
Sir, I have exited and I have joined again, sir. हाँ Your voice. एग्जिट करो फिर इन करो आप. Good evening, sir. Sir, are you able to hear me? Akash, am I audible? Yes. Yes, you are. I'm audible, right? Or is there any problem? Should I exit and No, you are audible. excuse me, sir? यस भावना बोलो. Sir, I'm audible. ना आवाज नहीं आ रही भावना. आप अनम्यूट करो, अनम्यूट करो अपने को, अनम्यूट करो. आप म्यूट हो क्या? यस यू आर म्यूट. Sir, I have unmuted. Others नहीं are आवाज नहीं आ रही. आवाज आ रही others are है able भावना to की? hear me, sir. आकाश आ रही है Yes, आवाज sir. उसकी? Yes, sir. सर आपका ईयरफोन शायद off हो समृद्धि गया। आवाज आ रही है भावना सर की? सर सबकी आवाज आ रही है सर, आपका ईयरफोन शायद ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया। सर एक बार आप अपने ईयरफोन चेक करिए प्लीज। सर आपका ईयरफोन यस भावना बोलो बोलो. Sir, हाँ with आ गई respect to India, am I audible, sir, now? हाँ यस 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 कम आ रही है. Yes. Sir, India would in fact want to maintain a friendly relations with Pakistan also, provided that they don't export terror to India. As long as they still continue with their tactics of terrorism and infiltration, then India would certainly have a problem with respect to maintaining its security. So if Pakistan is also understanding and they mend their own ways of exporting terrorism to India, then India would certainly want to have friendly relations with Pakistan also, sir, because it's our neighbor. First you make a stand. Pakistan has offered the friendly relationship with India. India should go for it or not to go for it? Sir, in this case, the offer of friendly relation from Pakistan is very direct, sir. It is from the Prime Minister. After that, it was followed by a clarification which said that India should undo the act. Yes, sir. पहले ही बताओ आप इसमें यस बोलोगे या नो बोलोगे? Sir, I would say yes if Pakistan is sticking to what it has spoken to. But looking at the previous history of dealing with Pakistan, they in fact have given such an offer and they have gone back on their own word. So in this case, we will have to properly testify and only then accept
the peace, sir. See the argument against your yes. Point number one. If you see the history, Pakistan is proven lawyer. Proven liar. जो कहता है वो नहीं करता है. Point number two. There is a three important forces in Pakistan. Pakistan Prime Minister, Pakistani Army, and Pakistani terror forces. Pakistan is not like India, where the Indian Prime Minister voice has the complete strength. If Pakistani Prime Minister is offering something, does it mean the Pakistani Army and Pakistani terror force also aligning with him? And in the past, India has tried hard to make a good relationship, but we failed. In these circumstances, do you think that the friendly hand offered by the Pakistan need to be accepted by India? No, sir, we should tread with caution. Achha. Now you read the last three lines of this article. Read. It would seem contradictory to refuse such a chance for enhancing regional stability, especially during a year when India's role as a statesman is being highlighted. उसके ऊपर पढ़ो. जब यूक्रेन और at a time when the advice at a time when the government is advising Russia and Ukraine for dialogue and diplomacy and is seeking to engage the Taliban out of pragmatism, it would seem contradictory to refuse such a chance for enhancing regional stability, especially during a year when India's role as statesman is being highlighted. And now you hear the Prime Minister's statement. It is not the era of the war, it's the era of the peace. Now you see these facts. Now what will say? Batao? Sir, I feel that India should not take any overt measures to engage with Pakistan. But however, because it's a neighbor, we should just maintain the neighborhood relationships that we have. And we should not completely accept the peace offer which is given by the Pakistani Prime Minister because of the credibility issues that Pakistan has got. Achha, how is this answered? Yes, sir, it is just a statement of Pakistan. Let Pakistan should come forward with a complete proposal. What is meant by the peace? Does Pakistan is ready to hand over the terrorist residing inside Pakistan? Is Pakistan is going to accept all the terror activities he has done earlier? Is Pakistan is accepting not to infiltrate inside India with the terror forces? Is the Pakistan is going to support the India's mission against terrorism worldwide? Is Pakistan is stopping to give the funding to the terrorists in India? Is Pakistan is going to stop the terrorists in India? If yes, we should go for the dialogue. Unless until Pakistan is promising these things, we should not go for dialogue. We cannot believe on the Pakistan's mere statement that I want peace. We want the concrete steps. India is believing in the peace. India is the peace-loving country, but India is not going to be fooled by the Pakistan's mere statement. बेहतर है ये? Yes, sir. Much better, na? Yes, sir. It's complete. Akash? Sir, so can you... Yes, sir. Yeah, Bhavana. Sir, can we say that Pakistan should show concrete and credible steps to stick to the peace offer that by the past history? सबसे अच्छा step है कि yes, Pakistan move is very welcome move. It is in line with the India's policy of the peace, but mere statement we can't rely because the history has taught us
Pakistan don't believe in the peace. Pakistan should offer some concrete step for the peace and we will reciprocate it. We will help you Pakistan. जो मैंने आपको 5-7 लाइन बोली है भैया आप वहां पे चेप दो. I don't think सिवाय इंटरव्यू में कोई सवाल करेगा आपसे सिवाय नंबर देने Yes, के. sir. और क्या बेटा? और कोई आर्टिकल है? Sir, after this, there is an article on developing schools without barriers. How to make schools more inclusive for people with disabilities, for children with disabilities, sir. ये अच्छा आर्टिकल है. बताओ. चाय पिलाना आधा. हाँ बताओ. मजारा नहीं आ रहा है? Sir, भावना? sir, it is, yes, मजारा नहीं sir, आ it रहा? is nice, sir. Yeah. Yes, sir. आकाश? Yes, sir. आकाश? Yes, sir. Yes, sir. मजारा नहीं आ रहा? Yes, sir. Knowledgeable and हाँ? enlightening experience. क्या हुआ? Knowledgeable discussion. या हाँ. Yes भावना चलो. Sir, in fact, it refers to a UNESCO report which says that around 1.7% of the population in India are children with disabilities, and because of the disabilities that they face, more than 70% of them have never attended any kind of an educational institution. So what needs to be done is we need to motivate the children to take part meaningfully in the indoor outdoor activities that the school or the education system would provide. So firstly, sir, it gives certain barriers to accessibility. Like the school entire infrastructure is not conducive to accommodate people, children with disabilities. The toilet facilities or drinking water or even the reach to the classrooms is not possible. In many schools, there is no proper infrastructure. Then second major issue is and learning practices. Many schools don't accommodate the needs of mentally disabled children or children who are blind and hard of hearing. So there are no proper teaching pedagogy which can be designed for those students as such. And third one is the inclusivity and the acceptability, sir. Where the other children or the other students, they themselves in fact resort to mockery, or they are not sensitive enough to include any child with disability as their own among their peer group as such. So with these are the main difficulties which any child with disability would face when he's going to an educational institution. But the Article 21A of the Constitution has given the right to education, and it makes education compulsory and mandatory for all children, irrespective of their physical disabilities or any other disability status. And the government has also been positive in launching the Accessible India campaign. An important pillar is the environment sensitivity behavioral change, which Accessible India can. Sir, other than this, there are other agendas like the principle of leave no one behind and the agenda for sustainable development. So these should also be considered, sir. So what can be done now? Coming to the solutions part, like how can we? One would be developing inclusive and accessible schools with respect to improving the infrastructure and the teacher or the sensitivity in the schools. The other one it talks about is a multi-pronged participatory approach, wherein it will provide an enabling environment. Sir, again, it talks about increasing the awareness, sensitization programs for children, for parents, and for us, then upskilling of teachers to handle certain specific students, and also they have to be given technical training and co-learning platform also, wherein learn with their peers. So one major aspect is the use of digital technologies. This was not mentioned in this article, sir, but I felt that digital or online learning can also be a very major game changer with respect to inclusivity of children with disabilities.
So if they are having any motor disabilities wherein they can't walk or any such disability, then the technological or digital education can be a very big game changer in this aspect, sir. So this was the overall gist of the article. You try to relate this Article 21, 21A and 45. These three articles of the Constitution try to correlate. If we are not able to give the proper education to the children, it is violation of Article 21. It is basically speaking about the children who are having certain disability. And these children need a special care. And the 1.7% population has been calculated, has been estimated, who are having the physical, institutional, and socio-economic problem. And they have never been attended at the early stage. And they are not a child who can sumo motu go for the education. They need to be motivated. They need to be participate. They need to be taken to the participation meaningfully. And if we are not able to provide them as their requirement, we are not following the mandate given the Article 21, where everyone has a life of personal liberty. 21A is saying they give the right to education. And Article 45 is saying that free and compulsory education to all children until they complete the age of 14 years within 10 years of commencement of the Constitution. They have used the word all children in Article 45. And if we are not including these child having disabilities, then we are not following the mandate of the Constitution. Now come on the solution part. We need the proper infrastructure. We need the specialized teacher. Every teacher cannot do. Teacher need to be compassionate. India is ratified the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. And we have made the Disability Act 2016, where the right of these people has been recognized. Government has also launched the Accessible India campaign, Sugamya Bharat Abhiyan 2015. And one of the thrust area of the campaign is accessibility to built environment conducive to these type of the children. Only system which will work for these children is interactive session, understanding the individual problem. We need to encourage this. जो 5 principles last में लिखे हैं, equitability, usability, durability, affordability, cultural adaptability, and aesthetic appeal should be embedded from the planning to implementation to evaluation stage of providing infrastructure services in schools. And then we are able to remove the barriers. मेरा काम हो जाएगा आपका इतने में कुछ रह गया Sir, it is I feel that it is focused more on the physical disabilities aspect of it. Mental disabilities like children facing autism or palsy.
So आप क्या how है we ना, can cater to their needs? you use the Disability Act, you extend this article for the complete disability. जो डिसलेक्सिया है, ऑटिज्म है, आप सब शामिल करो इसमें, नॉट ओनली फिजिकल, कंप्लीट। उनको पढ़ाने की स्टाइल अलग होती है, उनके स्कूल अलग होते हैं, सिस्टम अलग होते हैं। उन बच्चों को इनकरेज करने की जरूरत है, डिस्पाइट दैट दे आर नॉट परफॉर्मिंग, यू इनकरेज देम। आप इसको एक्सपेंड करो आप। Sir? Hmm. Sir, can we say that somewhere the issues related to children, like especially mental disabilities, they are not recognized by the teacher or by the parents at an early stage? Why? Because हमने बोला ना, our teachers are not trained. It is not part of our teachers training. We need to include in the teachers training. They are able to identify them, able to send to the proper rehabilitation center. Sir, and what is the role of society? Society need to be compassionate. Society इस problems को recognize करे। हम लोग recognize नहीं करते थे, इसको accept करे। जो एक मंद बुद्धि शब्द है बच्चों का, बंद किया जाना चाहिए। बच्चे मंद बुद्धि नहीं होते हैं, they are special child. और कुछ Yes, sir. हो गया? Yes, sir. Sir, can we say that we are largely focused on building only the physical infrastructure to help persons with disabilities, whereas what is needed is a more inclusive approach? Although that physical infrastructure should be complemented आप even यहाँ by भी कैपेसिटी बिल्डिंग पे आओ, capacity building of education system. And the capacity building, infrastructure need to be perfect, and our teaching system need to be conducive to with these type of children. yes, sir. क्या है भावना, कॉमन सेंस से ज्यादा कुछ काम नहीं आता है। यहाँ पे सारे मार्क्स मिलते हैं कॉमन सेंस के। जितना जानकारी है ऑलमोस्ट सारे एस्पायरेंट को आसपास रहती है। कौन कॉमन सेंस लगा के चैनलाइज करके बोल देता है, मार्क्स लेके निकल जाता है। कोई नॉलेज वॉलेज हम लोग क्या है, जो हम लोग नॉलेज बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? अपना आंसर और लोगों से डिफरेंट हो जाए, अच्छा हो जाए। लेकिन इससे क्या है, एक अपने को एक सेंस डेवलप हो रहा है कि हम वह सवाल भी आंसर कर लेंगे जो हमने पहले तैयार। अगर यह सवाल आ गया तब तो आंसर करोगे ही करोगे, ये नहीं आएगा तो भी कर ले जाओगे, बिकॉज आपका दिमाग ट्यून होता जा रहा है। कैसे चीजों को हम बांध के हम कहानी सुना रहे हैं, हम लोग कहानी कहना सीख रहे हैं, कैसे कहानी हम लोग बना लेते हैं। तो वी आर एबल टू मेक स्टोरीज। चलो नेक्स्ट बताओ क्या है। Sir, yesterday's paper. हाँ बताओ क्या है। Sir, in that in Indian Express there was a article jobs data and its discontents. One minute. चलो कल पेपर ले आएंगे, एक मिनट। Yes, sir. कल क्या था, 24 तारीख थी ना? So 24th. हाँ क्या बताओ उसमें? Sir, I did not understand the article only. Jobs Yes, data sir. and its discontent. किस पे है?
Page number 13. Page number 13, Indian Express. यार बहुत काम कर रही है। Oh, okay. हाँ बहुत काम कर रही है। Okay. Sir, because all that I understood was that the government is not coming out with a periodic data on employment, because of which we are relying on other private data. ये आपने कोई काम कर रही है, कोई काम कर रही है। Sir, then in Hindu there is an article yesterday. Which one? Page number 6, Hindu yesterday. Sir. Yes. कौन सा बताओ? Democracy and its structural slippages. बताओ इसमें क्या क्या है बताओ। हरबंस मुखिया के हिस्टोरियन। Sir, in this. Sir. He's a historian. Yes, sir. Yeah. Sir, in this also I did not completely understand, sir. I will just try to explain what I have understood. ये किसी काम पर नहीं है। इन्होंने कास्ट बेस पे मतलब जो एनालाइज किया है उससे कुछ नहीं मिल रहा है। Yes, sir. Because I did not understand with respect to devolution and capitalism. Because in our country, although it is a democracy, we are for social welfare. क्या so है? I did not exactly understand. He is a communist oriented writer. इन्होंने डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात कहनी शुरू की है कि डाइवर्सिटी को कोई स्पेस नहीं है। मतलब इनकी बात बहुत अपील नहीं की मुझको। The uniformity takes the form of periodic multi-party free and fair elections and guarantees of various kinds of freedoms, especially of the market. The elections are a means of self-correction for government policies and actions. ये तो कोई खास बात नहीं है, तो बहुत सिंपल सी बात है उसमें। फिर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस पे आ गए हैं। Our elections are truly free and fair, उसमें सवाल खड़ा कर दिया इन्होंने। In practice, again, contrary to theory, even as a voter is all alone in the polling booth, voting as an untrammeled individual, her and his vote is still conditioned by the numerous demands by the family, community, religion, culture, and above all by the political alternatives offered by the political parties. I don't think it's कोई sense है इसमें। Next बताओ। Then every individual will have his own biases. देखो क्या है ना, इन्होंने यह कह दिया है कि आदमी जो वोट देता है वो ठीक नहीं देता है, वो किसी बायस से देता है। ये आप नहीं कह सकते ना। यू आर चैलेंजिंग द विजडम ऑफ वोटर, यू आर चैलेंजिंग द डेमोक्रेसी, यू आर चैलेंजिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। इनका व्यू पॉइंट बहुत, मैं इनको जानता हूँ। ही स्पीक्स ऑन दिस लैंग्वेज ओनली। नेक्स्ट कौन सा है? एक फॉरेन यूनिवर्सिटी का है। डेटा प्रोटेक्शन फॉर माइनर्स। यस सर। डेटा प्रोटेक्शन कुछ है डिस्कशन का? No sir, nothing on discussion, sir. Because we still don't have a digital personal data protection law. We still only have the draft law. यस अभी आया नहीं है, आएगा तब बात होगी इसमें। इसमें आते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी वाले बातें हैं। यस सर। सर आई हैव नॉट रेड दिस आर्टिकल सर। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यस सर। जो फॉरेन यूनिवर्सिटी का चैप्टर है उसमें कंसर्न क्या क्या है, क्या क्यों ये हमारे यहाँ आ रहा है। एक तो कहा जा रहा है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है वह नेशनल इंटरेस्ट से कितना मैच करता है, और ये कहा जा रहा है कि जो हमारा कल्चर है हमारे कल्चर को थ्रेट नहीं करेगा। पहला कंसर्न ये। दूसरा, जो सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज है जो यहाँ आएंगी वह जो पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ सेटिंग अप ऑफशोर कैंपस विद देयर
एक्रेडिटेशन, रैंकिंग एंड रेपुटेशन, क्या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह यहां आएंगी उस तरह से? तो जो यूनिवर्सिटीज आएंगी वह अपनी क्वालिटी को लेके यहाँ पे थोड़ा सा सोच रही हैं। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है जो प्रोवाइड कर रही है सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज को, जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड में, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा कि इंडिया में आके वह अपने को ऑपरेट करें। अब जो एनईपी है वो फेवर कर रहा है एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को, और जो आइडिया है वो रेगुलेट होगा थ्रू यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो रेगुलेशन जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी कहा गया उसको टॉप 500 कर दिया गया है। अब जो इनिशिएटिव है इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस क्या क्या है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंपोर्टेड बाय दीज इंस्टीट्यूशन इज इंडिया must be on a par with the quality of course at their campus in the country of origin। तो जहां पर वह यूनिवर्सिटी है उसी के स्तर का यहां पर ऑन द सेम स्टैंडर्ड यहां पे एजुकेशन प्रोवाइड होगा या नहीं होगा। ऐसा कोई प्रोग्राम यहां न दिया जाए जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को जेओपार्डाइज करे, और या इंडिया के हायर एजुकेशन को जेओपार्डाइज करे। और भारत ने यह प्रॉमिस किया है कि वो एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देगी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को। ये तो उन्होंने कहा है, लेकिन साथ में क्या बोला है कि जो यूजीसी है उसके कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और यह भी कहा गया है ऐसा आप कुछ नहीं करोगे जो कॉन्ट्रेरी हो सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के, और फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स के, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, जो हमारे आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है। अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि भारत क्यों चाहता है फॉरेन हायर एजुकेशन को यहां ले आना? अगर फॉरेन एजुकेशन इंडिया में आएगा, जो इंडिया के बच्चे फॉरेन पढ़ने जाते हैं, 28 से 30 बिलियन डॉलर जो फॉरेन एक्सचेंज की बात कही जा रही है वह बचेगा। लेकिन ये भी बोलते हैं जो 28 से 30 बिलियन डॉलर की फॉरेन एक्सचेंज बात की गई है यह डेटा से कोरोबोरेट नहीं हो रहा है। अब ये बोलते हैं आपका बच्चा जो बाहर जाता है फॉरेन एक्सचेंज जाता है बचेगा, लेकिन यह बात भी उन्होंने कहने की कोशिश की है कि जो आप एजुकेशन में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, गॉट माय पॉइंट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो एजुकेशन में कर रहे हो इसका आप एक साइड देख रहे हो, यू आर नॉट सीइंग द अदर साइड। जो बच्चे बाहर जाते दे आर नॉट गोइंग अब्रॉड ओनली फॉर द डिग्री, वो बाहर जाते हैं एक्सपीरियंस के लिए, और जो वहां पर जब जाते हैं तो वर्क करते हैं, कैरियर प्रोस्पेक्ट ठीक करते हैं। जो ये एडवांटेज है जो बच्चे बाहर जाते हैं, इफ दे स्टडी इन द फॉरेन यूनिवर्सिटी established in India, they will miss these type of the advantages। और जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं वो अपने पढ़ाई का एक बड़ा पार्ट खुद फाइनेंस करते हैं। तो saying that all exchange is diverting from India to abroad is not a very correct fact। और जो उनका पढ़ना है उतना खर्चीला जितना कहा जा रहा है। तो यह एक फॉरेन यूनिवर्सिटी के प्रोस एंड कॉन्स की बात करते हैं। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बोथ साइड, you give your own opinion, foreign university is needed or not needed? Sir? Sir, I still feel that foreign universities' presence is
very much required in India. Despite these drawbacks, I believe that it would bring in lot of competition and the foreign pedagogy or the method of teaching. We are not talking about only parity in syllabus, sir, but also the unique methods of teaching that they use in their parent campuses that can be brought in here. And another major important factor is that it would reduce the brain drain that is occurring currently. So if we are able to retain our Indian educated talent and provide gainful employment opportunities for them, then we will be helping in the economic growth of a country, which is all inclusive, which will have Indians in their own parent country working for India. So it's a matter of pride also, sir. Then third is that it would act as centers of excellence, wherein it would increase or raise the quality standards of other Indian universities also, which would want to compete with the foreign universities. So overall, in the education system, it would increase the overall quality and the standard of education itself, especially in that of higher education. So this would be an added plus point other than the forex that we are going to save by having the foreign universities in India, sir. So I think with these benefits, which in fact outweigh the concerns, we can as well go for having the presence of foreign universities in India. ब्रेन ड्रेन हटाओ इसमें से. Why? We have the brain drain mainly from the very high educational institutions. आवाज आ रही मेरी भावना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. If you see who are going abroad, mostly from very high standard educational institutions. And that may continue after coming foreign universities here also. We can stop the brain drain only when we are able to provide the good business opportunity, job opportunity inside India. So your brain drain argument will not go very well when you try to explain the issue of universities. Second, your argument of competitiveness is very nice. It will create competitiveness. The faculty of the foreign universities will come. That will help us to understand more via a lot of seminars, the guest faculty, those foreign teachers may help to our institutes also. Pedagogy will improve. Certainly, we will save a bit on the foreign exchange because so many students may study here. And the concern flagged by the Indian government will be complied with this. Our integrity, sovereignty, our culture, our ethos need to be respected, and most likely they will respect. I think it's enough. और कुछ बताओ? Sir? कुछ दूसरा point? बताओ? Sir, I have a doubt, sir. Sir, बोलो. In fact, UGC is only giving the autonomy to these foreign universities to establish in India. But Yes. they can give the same amount of independence and autonomy to the Indian higher educational institutions itself. Instead of going for over-regulation of those institutions. You are talking about our own universities. So, sir, if we can bring the... Yes, sir, which are regulated. Yes, you were arguing this. Bulaki sir, there need to be give the liberty to our institutes also. We need to see how our curriculum, our पाठ्यक्रम, the system need to improve. सर काम करने की जरूरत यहाँ भी है. जो हमारे curriculum है, हमारा जो syllabus है, वो obsolete ऐसा है. इसको ठीक किया जाना चाहिए with the changing time, with the world environment. जैसे climate change का issue है, इसको और ज्यादा contemporary बनाना चाहिए. International relation है, political ideologies हैं,
इनको और ज्यादा जो नए नए रिसर्च साइंस में हो रहे हैं, फिजिक्स में हो रहे हैं, और फॉरेन यूनिवर्सिटी आएंगे उनको फायदा भी होगा, वहां का हमको इनपुट भी प्राप्त होगा. तो यू कैन आर्गू दिस. So we can say that the UGC has to give more autonomy and liberty to Indian private institutions also. So You they argue can this. have the You freedom argue in this way to that is the formulate time. own. It is the time to give the autonomy. Hello, it is the time to give a broad policy need to be framed in which the India's integrity, sovereignty, cultural ethos may be taken care of. But besides that, autonomy need to give the institutes to work accordingly for the benefit of the society. बस करें आज? Sir? हाँ, और कुछ है कि बस करें आज? Sir, one more question, sir. हाँ, करो, कोई दिक्कत नहीं. Sir, because I felt that if we are giving so much of autonomy to the foreign universities, which we are not giving to our own universities, which are established in India, then it would not be a level playing field for both. So Indian university can never compete. So if we want the same amount of competition and excellence going forward, then we should in fact give the same parameters to our Indian universities Same also. कहने So ज़्यादा is it अच्छा है right बोलो to कि say sir, this, we sir? need to give the autonomy to our universities, our institutions, but the terms and condition of the foreign universities and our university will not be the same, because if I am inviting someone, then I have to listen them also what they want. I cannot push them inside India against their wishes. I have to take care of sovereignty, integrity, our culture, but on the same time, we need to see what they want. And we need to come on a compromise because we want them. भाई आप बहुत टफ कंडीशन कर दो ना, हम नहीं आएंगे, आप क्या करोगे? Your NEP will fail. Yes, sir. अब आप कही रहे हो भाई हम अपने यहाँ पे ऑटोनॉमी देंगे, हम इनको देंगे, आप और बेहतर करो. हम एक हम पॉलिसी फ्रेमवर्क दे देते हैं इनको, उसके बाद हम देखते हैं लोग क्या करते हैं. लेट देम वर्क. It is not era of the, it is the era of the not hard regulation. It is the era of the persuasion. आकाश आप कल ऐसा करो, कहीं और से आप लॉग इन करो. आकाश? यस सर. बेटा कल कहीं और से लॉग इन करो. ओके सर. सर लगता है आपके घर से होता नहीं है ये. ओके सर. जो बेटा आपकी वो ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, कहते हैं स्पीकिंग वाली. Yes, sir. And sir, can we add one point in this subject? बोलो. That it will attract the students from other countries as well, and the cultural dissemination of India will be spread on those countries as well. Like our software, can we connect this software diplomacy and the attraction of? Yes. Point is well taken. The foreign students will also come to the India. India is the land where the cheap education is available, because the dollar-rupee exchange is there. And if foreign nation will come, there's cultural assimilation and dissemination of the culture. It's good point. Yes, Akash, it's fine. और भावना बताओ, और कोई issue? No, sir, I think it's complete. चलो तो कल हमने जो बिजनेस चैनल का आज पोस्ट किया है, कल इस पर डिस्कस करेंगे, वहां शुरू करेंगे. Yes, sir. ओके, टेक केयर, बाय. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Good night, sir.